I hope you all are safe and secure. Many students have requested me to make the class bilingual. I can try for that. Okay, let's start today's topic. So today's topic is sentences part 2. But, but, you know that before starting the topic, let's see the thought of the day. The thought is the only difference between the ordinary and the extraordinary is that little extra. किसी भी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस जो व्यक्ति टारगेट से ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लेता है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाता है. द वन who put little extra efforts than an average person becomes extraordinary. But yes, consistency should be there for everything. So, start doing a little extra than your routine work from today onwards. Let's move on. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, बट वो मीनिंग या अर्थ के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स थे. आज हम करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं. स्ट्रक्चर मीन्स संरचना या बनावट के आधार पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो. उस वीडियो से आप मीनिंग के आधार पर अच्छे से सेंटेंस के टाइप्स समझ सकते हैं. चलिए देखते हैं. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. इफ़ आई से राधा इज़ डांसिंग, राधा इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ डांसिंग इज़ अ फाइनाइट वर्ब. सो by the combination of subject and finite verb, it's giving the clear meaning. Then let's see the types. There are 4 types of sentences on the basis of structure. Number 1, simple sentence. Number 2, compound sentence. Number 3, complex sentence. Number 4, compound and complex sentence. सेंटेंस के टाइप्स को समझने से पहले लेट्स कम टू नो अबाउट क्लॉजेस. क्लॉजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज क्लॉजेस को जाने बिना आप सेंटेंसेस को नहीं समझ पाएंगे. ऑल राइट, सी व्हाट आई हैव रिटन हियर. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. येस, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. बट कन्फ्यूजन, अभी तो आपने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर ये आपने डिफरेंस समझ लिया तो सेंटेंस और क्लॉज की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व. तो डिफरेंस ये है कि क्लोज सेंटेंस का पार्ट हो सकता है बट सेंटेंस क्लोज का पार्ट नहीं हो सकता. देन किसी भी सेंटेंस में एक और एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं. सो रिमेंबर डिफरेंस नंबर 1, अ क्लोज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट अ सेंटेंस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ क्लोज. Number 2, a sentence is made of one clause or more than one clauses. Number 3, a sentence gives complete meaning but a clause may or may not give complete meaning. If you want to learn more about clauses, subscribe to my channel and watch the videos on clauses and sentences. Now, you need to keep in mind that clause is a small unit of a sentence. Then next is types of clause. There are 2 types of clauses. Number 1, independent clause. It is also called main clause. It's like a simple sentence. It has a complete meaning. As for example, the sun rises in the east. The sun is a subject. Rises is a finite verb. Okay, one subject, one finite verb. Right? It makes a complete sense. Number 2, dependent clause. It is also called subordinating clause. It does not make a complete sense. It needs main clause to express its meaning. As for example, I remember what you said yesterday. I remember is independent clause. What you said yesterday is a dependent clause. So it always need an independent clause to express the meaning. Right? अब समझते हैं types of sentences. So number 1 is simple sentence. A simple sentence is one which contains only one subject and one finite verb. It can also be called independent clause. I think it's easy to understand after explaining so much. Let's see the example. Riya has a little brother. Riya is a subject, has is a verb. Example number 2. I love samosas.
सब्जेक्ट क्या है आई एंड वर्ब क्या है लव. सो इट्स सिंपली लाइक एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस. A compound sentence is one which contains two or more independent clauses, and these clauses are joined by a coordinating conjunction or a semicolon. So some coordinating conjunctions are and, for, but, nor, or, yet, and so. Let's understand with the example. Hema was overjoyed. She brought a new dress. आप देख सकते हैं हेमा वॉज ओवरजॉयड, शी ब्रोट ए न्यू ड्रेस. दोनों ही सेंटेंसेस कंप्लीटली मीनिंगफुल हैं एंड उन दोनों को ही ज्वाइन किया गया किससे, सेमी कोलन से. सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस. एग्जाम्पल नंबर 2, आई एन्जॉय प्लेइंग ओथेलो बट माई सिस्टर प्लेज चेस. अगेन यू कैन सी बोथ द सेंटेंसेस आर completely meaningful and they are also joined with a coordinating conjunction but. So it's very easy to understand. Number 3 is complex sentence. A complex sentence is one which contains at least one independent clause and one or more dependent clauses. So याद रखिएगा complex sentence में एक independent clause होता है और एक से ज़्यादा dependent clauses होते हैं. The clauses are joined using subordinating conjunctions or relative pronouns. Who, which, that are relative pronouns. Some subordinating conjunctions are while, if, as, before, since, until, though, etc. Let's see example number 1. You can reduce your weight if you do exercises daily. देखिए you can reduce your weight is completely meaningful. So ये क्या है, independent clause है. You do exercises daily, ये complete meaning show नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, dependent clause है. And both are joined by a subordinating conjunction if. यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट क्लोज से बिगिन होता है तो दोनों क्लोजेस के बीच में कोमा का इस्तेमाल होता है. ये आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे. सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2. बिफोर आई वॉक अप, आप देखिएगा कोमा का इस्तेमाल हुआ है बिफोर आई वॉक अप, बिकॉज आई वॉक अप इज क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है और सेंटेंस डिपेंडेंट क्लोज से शुरू हुआ है. माई मदर हैड मेड ब्रेकफास्ट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज एंड both are joined by a subordinating conjunction before to make it meaningful. All right, I think you have understood now. Number 4 is compound and complex sentence. These type of sentences contain at least 2 independent clauses and one or more dependent clause. It's a combination of both compound and complex sentence. मीन्स इस टाइप के सेंटेंस में आपको 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस या कंपाउंड सेंटेंसेस मिलेंगे और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेंगे. एंड दे आर ऑलवेज जॉइंड यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल नंबर 1, Priya forgot her friend's birthday, so she sent her a card when she finally remembered. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं या 2 कंपाउंड सेंटेंसेस हैं. प्रिया forgot her friend's birthday और she sent her a card, और दोनों को ज्वाइन किया गया किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन so से. ओके, when she finally remembered, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग शो करता है, so it is a dependent clause. Example number 2, we won the game but my uniform was muddy because it rained the entire time. We won the game, again independent clause. My uniform was muddy, again independent clause, and both are joined by a coordinating conjunction but. The sentence in green color, because it rained the entire time, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है and that's why it's a complex sentence. Understood? मुझे उम्मीद है कि अब आपको सेंटेंस के चारों टाइप्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे. सो दिस इज़ द टाइम फॉर एक्सरसाइज. लेट्स डू इट. ओके, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़कर उसका टाइप बताना है. ऑल राइट, यू कैन सी एज आई हैव रिटन हियर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. और यू कैन डू वन थिंग, pause the video and write down the answers in a rough notebook, then play the video again, match your answers with mine. Okay? अब ये नहीं सोचना कि मैम पता नहीं क्या कराने वाली है, इसमें कुछ भी मुश्किल
नहीं है, बस आपको ऑनेस्टी से एक बार खुद आंसर करके देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स सी सेंटेंस नंबर 1। He tried hard but he did not succeed. He tried hard, he did not succeed. दोनों ही independent clauses हैं which are joined by a coordinating conjunction but. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। ओके। नंबर 2 इज हिज करेज वन हिम ऑनर। हिज करेज सब्जेक्ट है, वन फाइनाइट वर्ब है और इसमें सिर्फ एक ही क्लोज है और वो है इंडिपेंडेंट क्लोज। देन टेल मी विच सेंटेंस इज दिस? सिंपल सेंटेंस। यस। नंबर 3, द म्यूजियम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। The museum was very interesting shows the complete meaning. As I expected पूरा मीनिंग शो नहीं कर रहा है। ओके। सो एक किस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4, दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। दे ऑलवेज टॉक, अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु नेवर थिंक डिपेंडेंट क्लॉज है एंड इसमें हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। सो सेंटेंस नंबर 5, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं एंड दोनों को ही किससे कनेक्ट किया गया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से, राइट? स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस। बस वेरी सिंपल। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला दो तो फोर्थ टाइप का बन जाएगा। फाइन। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।